Our top lead on urban debate. Ladies and gentlemen, we are now a population of 1.4 billion, officially the most populated country in this world. Is that why life is cheap in India? That people die because of potholes, they die because of metro pillars and hoardings falling on them, they drown because underpasses get flooded, and we just move on. We don't care if accountability is fixed or not for this criminal negligence. We don't care if the promised inquiry disappears into the pothole. Maybe we would care if it happened to us. If a young 34-year-old from our family, your wife, your sister, your daughter, was electrocuted in front of your eyes. It happened this Sunday to a family, to the Chopra family in Delhi. They were headed for a vacation to the hills. Sakshi Ahuja, the woman on your screens, a mother of two, cancelled her road trip and decided to take the train because she wanted her kids to experience the Vande Bharat from Delhi to Chandigarh. It's a train Indians are immensely proud of. Parents want their children to travel in this train. The monsoons had hit Delhi 2 days in advance. Maybe it wasn't safe to drive either. That decision proved to be fatal. At the New Delhi railway station, one of the busiest transit points in India, the family disembarked. There was waterlogging in some parts because of the rains, so Sakshi grabbed an electric pole for support. Sometimes when you're slipping, you don't see what you're trying to hold. You just want some sort of support. The moments that followed were pure horror, pure and simple horror. This young woman, a teacher, an architect, a mother, a wife, a daughter, was electrocuted. As she was being electrocuted, she screamed at her children not to come near her. She didn't want them to be harmed. Her sister tried to help her. She got a shock. There was a cab driver who tried to help her. He got a shock as well. Within minutes, Sakshi was dead. She died in front of her children. Killed not by an electric pole, but murdered by civic apathy, murdered by the classic Indian attitude of chalta hai. Where naked wires hanging over our heads, chalta hai. Where potholes, chalta hai. Where underpasses being flooded, chalta hai. Where people dying, chalta hai. We are 1.4 billion. अगर ये चलता है आपके लिए तो ये नहीं चलना चाहिए. Because as I said, this can happen to you, this can happen to your family. 5 lakh people come and go to the New Delhi railway station every day. It could have happened to any one of them. It could have happened to your family. So there are questions you need to ask of authorities. Listen in to what Sakshi's family is saying today. If you can take this case forward to the right person, right authority, maybe to, I know that Railway Minister, Mr. Vaishno is IIT and he knows basic things about amenities and the safety features. He's working on so many projects all over India. I'm really impressed by the government, but things like this really put your back forward and you really start feeling demotivated about your country. So I really hope that Railway Ministry take note of this and they should ensure proper justice should be done, because not single person is responsible for this. In Railway Ministry, if you have to get the work done, you have to involve so many different divisions. There's so many people involved in getting the work order done. So who all were responsible, whether at the lower level or middle level or higher level. So all those who are responsible should be made liable. They should be punished as per the law. We have a firm belief in law. But yes, justice should be done on time. It should not be delayed. मैंने क्या, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं. मैं इनको देखूंगी, मैं क्या करूंगी दूसरे कामों को. केस वेस के चक्करों में मेरे को कुछ नहीं पता. क्या करूं? मैं तो घर में, मैं वहाँ नहीं थी. मेरे को बच्चे नहीं बताया सब फोन पे. मम्मा आप आ जाओ, मेरे को बोलता है सुबह सुबह मेरी मम्मी को कुछ हो गया है. मैं भागी गई.
हॉस्पिटल में कोई केयर नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई बोला एम्बुलेंस भी टाइम पे नहीं आई, एम्बुलेंस भी नहीं आई। वो गाड़ी करके गए, वहाँ देखा तो ऐसे पड़ी हुई बर्फ की बर्फ। ऐसा किसी के साथ ना हो, हम यही चाहते हैं। जो हमारे साथ हो गया किसी और के साथ ना हो। The railways, on their part, are admitting to their lapse. Do they have a choice? We all know they are responsible. They are telling us an inquiry has been instituted. Great. Question is, will this inquiry lead to accountability being fixed? Will the railways tell us who's the person who they are holding guilty for this young woman's death? So far, we don't have an answer. All we have is a watered down FIR where whoever is arrested, if at all, will get bail within minutes. My colleague Pragya Kaushik spoke to the general manager, Northern Railways. Listen in. He's saying the buck stops with the railways. A great statement to make. But have you fixed accountability? So far, no. Sir, a very sad incident, but there are also allegations that there is no apathy towards civic amenities at all. What is the case? What did you find out in your inquiry, and who do you hold accountable for this? See, it was a very, very sad case which happened yesterday, in which a young lady lost her life. Immediately after the accident, the Government Railway Police GRP had cordoned off the area, because FIR was also lodged, a criminal proceedings has also been initiated. But yes, from the prima facie report and what we can see from a distance, there was some cable fault, and there was a leakage of current from the cable, and I have ordered them that within 7 days they will give us the report pinpointing where the fault had happened, who was responsible for it, and will give a strictest punishment to the person or the group of persons who are responsible for that incident. You know, this is a very difficult time for Sakshi's family, but I did want to invite them. I wanted to invite them. You know, these are moments when you know the family requires time and they need to be left alone to grieve. After all, this is a family that has lost a daughter, that has lost a daughter-in-law. You don't want to intrude in their space right now. But ladies and gentlemen, I do want you to hear from this young woman's family. I want you to hear from her mother. Praveen Chopra is joining us on the broadcast. Praveen ji, सबसे पहले तो हमसे बात करने के लिए धन्यवाद. ऐसी सिचुएशन में मैं आपसे पूछूं भी क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमने अभी रेलवेज के अथॉरिटीज को सुना है, वो कह रहे हैं कि गिल्टी विल बी पनिश्ड. बार-बार बोल रहे हैं गिल्टी विल बी पनिश्ड. आपको लगता है कि कुछ होगा? क्योंकि हमारे देश में गिल्टी आर नेवर पनिश्ड. ऐसे है जी, मैं आपको FIR की कॉपी दे सकती हूँ. हम वकील तो हैं नहीं, लेकिन हमने जो कहा उसके हिसाब से उन्होंने FIR भी नहीं लिखी. पता नहीं 387 दे दी, जिसमें कोई सजा नहीं, कुछ नहीं. 287, 300, सॉरी मैं 387 बोल गई हूँ. और 304 पे हमने कहा था, 304 नहीं लगाई, उन्होंने साथ में अपना A जोड़ दिया. क्यों? मर्डर का केस क्या ठीक नहीं है? क्या मेरी बेटी का मर्डर नहीं हुआ? क्या दर्दनाक हत्या नहीं थी? कौन जिम्मेदार है? हत्या का मतलब हत्या होती है. नेग्लिजेंस का क्या मतलब है? इतने कंप्लेंट, इतना काम होने के बावजूद सारी कंप्लेंट्स आई आपके पास, रेलवे वालों के पास, पता है यहाँ करंट है, उसके बाद काम नहीं किया, तो ये हत्या नहीं और दर्दनाक क्या है? मेरी बेटी शहीद हुई है, शहीद होके उसने ये सिद्ध कर दिया है कि पीछे जो आ रहे हैं, ऐसे हाथ किया था उसने, कहती है जो पीछे आ रहे हैं रुक जाओ, यहाँ करंट है. उसने लाखों लोगों की जान बचाई है करंट
का बोल के रेलवे वालों को सुनाई अब दिया है। क्यों पहले नहीं दिया जब पहली हत्याएं हुई हैं? उनको पुरानी हत्याओं का भी हिसाब देना चाहिए। ये हत्या तो है ही है। क्या सोचते आप? इतने बच्चों की मां मर गई। ऐसी बेटी मेरी मरी है जो शेरनी थी। कुछ कार्रवाई नहीं हुई और ऐसी कार्रवाइयां करने का हौसला दिया है पुलिस ने भी। हमें बेवकूफ बना के धाराएं लगा दी। हमें सिर्फ 304 धारा लगवानी है, इसके अलावा कोई धारा नहीं लगवानी। दोबारा से एफआईआर को ठीक करें, पहली धारा को हटा के उसकी गलती की माफी मांगे और 304 पे मुकदमा दायर करे। ये पुलिस वाले सब मिले हुए हैं, रेलवे वाले। हमारी बच्ची की जान ले ली और बाकी कई लोगों की जान और लेते। ये रेलवे स्टेशन का नाम बदल दो, शहीद साक्षी आहूजा रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली, ये लिख दो उसके ऊपर मोटा मोटा, सब पथ को पता चल जाए। करंट लगने वाला स्टेशन है ये, इसमें नहीं जाना। बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए, इस पे नहीं जाना। वंदे भारत को गोली मारो। ये ट्रेन का अचार डाले हम, जब ट्रेन तक पहुंचे ही नहीं हम। क्या करे वैष्णव जी, बच्ची आपके भी होंगे, कभी हमारा दर्द पूछ के देखो। मेरी बेटी का स्मारक बना दिया जाए ये रेलवे स्टेशन का नाम बदल के। आप कुछ करना चाहते हो तो करके दिखाओ। 10-15 हजार की कंपनसेशन नहीं चाहिए तुम्हारी, न्याय चाहिए, न्याय। हत्या करने वालों को हत्या का दंड, कारावास और स्टेशन का नाम बदल दो। मेरी बेटी को शहीद बना दो जिसने इतने सारे लोगों को अगा करके बाकियों की जान बचाई है। उसने ऐसे हाथ किया था, खंबे को नहीं पकड़ा था। झूठ बोलते हैं सब। मैं चश्मदीन हूं, मैं उसके पीछे पीछे आ रही थी, मेरे से चला नहीं जाता, मैं इतने कदम दूर थी। ऐसे हाथ किया उसने, खंबे को पकड़ने के लिए नहीं किया। वो बेवकूफ नहीं थी, बहुत पढ़ी लिखी थी वो। क्या खंबे पकड़ेगी बारिश के मौसम में वो बिजली के? और खंबे से पहले ही उसका पैर नीचे आ गया था और पैर पूरा नीचे गया भी नहीं था तो वो जल के राख हो गई थी, गिर गई थी। कुछ सेकंड में ये काम हो गया। क्या उसके बच्चों को मां दिला देंगे? कोई तो बोले। हाथ जोड़ के माफिया मांगने वाले आते हैं, अपनी जान बचाने वाले आते हैं, जान देने वाला, काम करने वाला तो कोई आए। खाली कहने से काम नहीं बनते हैं, काम करने से काम बनते हैं। इंसान बनने से काम बनते हैं, इंसानियत अपने दिल में रखने से काम बनते हैं। दूसरों को भी इंसान समझो। मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, उनको मां मिलेगी क्या? बायोलॉजिकल मदर खरीद के देंगे मुझे उसकी? कौन करेगा उनकी सेवा? कौन उनको पढ़ाएगा? कौन उनका काम करेगा? बाप कमाने जाएगा कि बच्चों को पालेगा? समझ नहीं आता ये क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। गलत धारा लगाई है। 304 धारा के बीच में ये काम करे और फौरन करे। या योगी जी को यहां बुला लो, एनकाउंटर कर दे इनका। जिनको गिल्टी नहीं है चुन चुन के मारे। कोई तो काम कर लो, कुछ तो कर लो देश के लिए। इंसानियत तो रख लो अपने दिलों में। जाने लेने पे तुले हो सारे के सारे। कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई आपकी कोई फर्स्ट एड टीम नहीं, स्टेशन की रिसेप्शन पे कोई ऐसा बंदा नहीं कि जो सुने हमारी पुकार। ना पुलिस आई। इतने घंटे में तो दुनिया तबाह हो जाती है। ये मेरी साक्षी थी जो सबको बचा गई, जो पीछे आ रहे थे उनकी जानें बचा गई। शहीद साक्षी आहूजा
शहीद साक्षी आहूजा, मेरी शहीद साक्षी आहूजा। नई दिल्ली स्टेशन का नाम बदलो, वहां स्मारक बनाओ उसका, उसके दुनिया देखे कि आप काम करते हो, आपको दर्द हुआ है। अगर सच में हुआ है तो करो, करके दिखाओ। सिर्फ बोलने से काम नहीं बनेगा, कागजी कार्रवाइयों से काम में नहीं बनेगा। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। गरीब आदमी छोटा सा भी काम कर दे तो उसके अगेंस्ट कई धारा लग जाती है। ये मर्डर करके इतने दर्दनाक मर्डर करके भी बाहर आ जाते हैं। और कंपनसेशन मेरा ये है, मेरी साक्षी को नाम दिया जाए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, साक्षी आहूजा, शहीद साक्षी आहूजा। हिम्मत है किसी देश के बंदे में, किसी अथॉरिटी में? हिम्मत है तो करके दिखाओ। अगर आप में जरा भी कुछ दर्द है इस बच्चे के लिए और जिनकी जानें बचाई हैं, उसके लिए धन्यवाद करना चाहते हो तो साक्षी का धन्यवाद करो। उसने ऐसे करके रोक दिया सबको, उसने खंबा नहीं पकड़ा। बार बार कहती हूं, खबर को जैसे मर्जी छापो, मैं साथ थी। पहले साक्षी, उसकी बहन, उसके बच्चे और पीछे मैं। कुछ तो करो, कुछ तो कर दो। मेरी साक्षी आहूजा को कंपनसेशन ऐसा दिलाओ कि जिंदगी भर सबको याद रहे। कोई वहां की अथॉरिटी साक्षी आहूजा का नाम देखे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। गलती नहीं करनी, गलती नहीं करनी। जान जा सकती है, गलती नहीं करनी। उम्मीद करती हूँ मिनिस्टर साहब के कानों में भी कुछ पड़ा होगा, मोदी साहब के भी कानों में। हाँ जी, बोलिए, और क्या कहना चाहते हैं जी? क्या पूछना चाहते हैं? स्टोरी को कैसे बोल्ड करवाना चाहते हैं मुझसे? हाँ जी प्रवीण जी, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहती, क्योंकि जो आपने बोलना था, आपने बोल दिया। और आपके लिए मुश्किल की घड़ी है, और फिर भी आप टीवी चैनल पे आई हैं और बैठी हैं और अपनी बात बता रही हैं। मुझे लगता है वही बहुत बड़ी बात है, और उम्मीद है कि आपकी बात जिसको सुनना चाहिए मैं देश की और साक्षियां और साक्षी जैसे और लोगों की जान बचाना चाहती हूँ, इसलिए बैठी हूँ। वरना मेरे को होश नहीं है, मैं इसलिए बैठी हूँ यहाँ। मेरे को शौक नहीं है टीवी में आने का, मेरे को शौक नहीं है टीवी में आने का, इसलिए यहाँ बैठी हूँ कि मेरी साक्षी शहीद हो गई, मेरी साक्षी शहीद हो गई। उसका कंपनसेशन जो मैं कह रही हूं वो दिला दो मुझे। बस 304 धारा लगे और उस बच्ची के नाम का रेलवे स्टेशन पे खुदवा दो टॉप पे, साक्षी आहूजा, शहीद साक्षी आहूजा रेलवे स्टेशन साक्षी आहूजा शहीद। जिसने जान बचा दी पिछले वालों की भी, उसको, उसके बच्चों को वीरता पुरस्कार दिया जाए। ये कोई बात साक्षी आहूजा के बच्चों को पता चले उनकी माँ कैसी शेरनी थी, जो आप मर के हाथ यूं कर गई कि यहाँ करंट है और मत आओ। वो बोल नहीं पाई, उसके मुंह से धुआं निकलना फौरन शुरू ऐसे कर रही थी, मत आओ, उसका इशारा था। बस उसने कुछ मुंह से नहीं बोल पाई, मुंह से बोलने लायक नहीं थी। क्या पूछेंगे, क्या करेंगे? मुझे ये जरा कभी बता देना आपने क्या किया,
जो बातें मैंने कही उसके लिए आपने क्या किया? उन तक हमारी बात पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? पुलिस डिपार्टमेंट को एफआईआर में धारा चेंज करनी पड़ेगी। गलत धारा लगा दी, एक आम नागरिक को बेवकूफ बनाते हैं। हमें पता ही नहीं धारा कौन सी होती है, क्या होता है। हमें तो इतना पता है दर्दनाक मर्डर के अगेंस्ट कौन सी धारा लगती है। और रेलवे वाले जी, आपकी मेरी बेटी बच्ची का के कत्ल नाम हुआ का है। कुछ करे। शी हैज बीन मर्डर्ड। प्रवीण जी, आपकी बेटी का मर्डर हुआ है। शी हैज बीन मर्डर्ड। जो अपने She has been सामने वो murdered. जलता है, जिंदा जल रहा है, जिंदा जल रहा है वो बस। बिल्कुल हुआ है, दर्दनाक कत्ल हुआ है, बड़ा भयानक कत्ल हुआ है। मुंह से धुआं निकल रहा था, उसके अंदर का सब कुछ प्रवीण जल जी, गया था। इसके आगे हाँ जी बोलिए। बस आपसे पूछने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, क्योंकि जो सवाल पूछे जाने हैं वो इस समय अथॉरिटीज से पूछे जाने हैं, रेलवे मिनिस्टर से पूछे जाने हैं, रेलवे से पूछे जाने हैं। और ये पूछा जाना है कि जिसकी वजह से आपकी बेटी का ये कत्ल हुआ है वो है कहाँ, उसके ऊपर क्या धाराएं लगी हैं, और वो अभी जेल के पीछे जाना क्यों है नहीं कि है। उसमें अभी धाराएं तो हमको गलत बोल क्यों दिया लगा गया। दी। जब हमने कहा था हमारी बेटी का मर्डर हुआ है तो ठीक, बस पुलिस डिपार्टमेंट में भी ठीक, धारे ठीक, बदलवाओ। वो बात पुलिस से भी पूछी अगर आप जाएगी। कुछ कर सकते हो, अगर इस मैं इंटरव्यू का प्रवीण कोई जी मतलब है तो सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन है तो कोई बात नहीं, सब मुझे एंटरटेनमेंट कर लेंगे आज हमारी आवाज से। लेकिन ये एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, ये बहुत कुछ करने का साधन है। ये क्यों नहीं समझ में आती, ये क्यों नहीं समझ में आती। प्रवीण जी, इस समय मैं आपको बोलूं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं ये इंटरव्यू खत्म करती हूं, लेकिन आपका ये इंटरव्यू और आपकी आवाज़ आज के दिन बहुत मायने रखती हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके परिवार को इस समय मैं क्या कहूं मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचे जो इस सिर्फ पूरे कहना मामले नहीं में है, कार्रवाई मैडम करके करने की दिखाना क्षमता है। रखते हैं। मैडम करके रेलवे दिखाना है, कहना नहीं है। चलिए, बस कहना नहीं है, कुछ करके चलिए दिखाना है। प्रवीण जी। कह के तो बहुत लोग चले जाते हैं। ओके प्रवीण जी, थैंक यू आप वेरी कुछ मच। करके, आप इंसान है, माँ हमसे बात Ava Singh, you're a lawyer, you're an activist, you're joining us on the broadcast. Dilip Cherian, this is Ava Singh, a mother who has seen her daughter being electrocuted in front of her eyes. She believes, and I believe, and I hope that every right-thinking citizen in this country believes that Sakshi Ahuja, all of 34, wasn't killed by an electric pole. She was murdered because of civic apathy. She was murdered because of our chalta hai attitude. You are very right. I mean, I have no words. I mean, the whole country is watching, and let me tell the mother that we all are mothers and I can understand her pain. And she's very right when she says that it was not 304A, it was not death by negligence, because definitely it is a bailable offense. The person will be out in 2 minutes. Why have you not put culpable homicide not amounting to murder? Why not 304 part 2, where at least the person would be behind bars for not less than 5 to 10 years, where he would not come out in 5 minutes on bail and say, oh, I can rock the system. And of course, she's very right when she says Ashni Vaishnav has something to answer. In a capital where a woman goes to take Vande Bharat, where a mother wants her children to go on Vande Bharat and is electrocuted because of open wires. If we go by the Yamuna
electric supply, the BSES, which supplies electricity, if you see their safety regulations, it's written clear and clear that any electric equipments manufactured, the audit has to be done, safety audit has to be done. They have safety regulations which say that electric machinery should be looked into. And when rains were down the corner, why was audit not done, safety audit not done? So it clearly shows the callousness of the railway department. And I'm also with the mother when she says that the minister needs to answer. And yes, the railway station name should be made Sakshi Ahuja. I say the same sentiments. And also these are senior officers. When the GM comes and says, I've ordered an inquiry, why don't you step down? Why don't you take the moral responsibility? We had, India had a minister like Lal Bahadur Shastri who stepped down. But here 300 people died in Balasore rail tragedy. Ashwini Vaishnav has not even come and apologized to the country. And you talk of just flagging new trains. I am appalled, and in fact, the mother in me cries. I can imagine, I can visualize those small children when they would have seen their mother being electrocuted. How can open wires be? It was the railway compound. It was duty to ensure that there is safety and security. I think by now, inquiry should have come. When they want to arrest people, they arrest immediately. When they want to arrest activists, they are arrested immediately. Then why are they protecting the railway officers? You do the inquiry in 24 hours. At least they would know that who was responsible for the safety of that area, who was supposed to look into those electric poles. That report should have come now. They are waiting that the media furore will die down, a mother will weep herself to death, and these people will not be bothered. If they are concerned about Beti Bachao, Beti Padhao, then you arrest these people. Put them behind bars tomorrow and file a supplementary FIR, add the sections, make it 304 part 2. It is absolutely, I would say, it is, if not murder, it is culpable homicide not amounting to murder, 304 part 2. The charges need to be put strong, because what they have put, 287 IPC which they have put, has 2 months punishment. Is it a joke? Are you trying to make a mockery of the system? And people, somebody who are coming to appreciate a railway station, and open wires are there? I mean, it's bizarre, it's unheard of. I mean, everyone would have tears hearing the mother. I salute you, Mirror, now that you could bring the mother, and you gave, and the mother has said what she feels. Every mother will say this, every sister will say this. The 2 children, what psychological impact it's going to have on them to see their mother die in front of their eyes. Is that scar which anybody can take care of? So there are 2 remedies, not only the criminal remedy, but also the civil remedy. For the death of Sakshi Ahuja, railway should minimum give a compensation of 10 crores. The money cannot take away the sadness, but at least 10 crores should be given to show that the railways is ashamed. No, the railways is not ashamed. If the railways was ashamed, we would have heard from Ashwini Vaishnav. A question was put to him. He said, my GM will answer. Why will the GM answer? You are the railway minister of this country. You are the railway minister of this country, Mr. Vaishnav. You have to answer. You have to answer to Sakshi's mother, who we've just heard, and you probably have to answer to your conscience as well. Vande Bharat flag करने से कुछ नहीं होगा. High speed trains एक के बाद एक launch करने से कुछ नहीं होगा. If at your railway stations people are dying because they are being electrocuted. Electrocuted. Dilip Charan, this is India's national capital. India's national capital. I think that there is no voice better than the mother's voice to have expressed the anguish and the huge disappointment with the system. The anger is justified and fully deserved in this case. I think that we have missed out on the voices of the 300 who died in Balasore. And these voices are mounting. Somebody is responsible, and the responsibility has to go to the very top of the system. The reason for this is that the whole country is watching as you are turning the limelight onto everything other than safety. The practical fact is
that as you put the pressure on the railway system, you have to understand that something is going to be compromised. Maintenance in this case, safety in this case, and basic hygiene in terms of protection of citizens and their ability to navigate through a station safely, even through rains. So I think that the fact that the mother has pointed out that the responsibility needs to go to the top. You need to make sure that this death and the 300 deaths that have just taken place are a signal to all of us as citizens that we ought to stop clapping about new coaches or new trains or new things being flagged off, but focus on what matters, which is safety. Focus on what matters, which is the ability of the system to ensure that anyone who's a user of the system has the right to survival. This is, as everybody has now said, is tantamount to murder. So why are the police and the system getting together, conniving, as it were, to make sure that this is papered over? The media will forget it in a few days, but the families of those 300 and plus one now affected will not forgive or forget. And I think that as a nation, we owe it to them to realize that image making of the railways does not depend on either faster trains or slicker looking trains. It depends on the ability to make sure that every single passenger is ensured safety to the best of our ability. And that best is certainly found wanting and lacking in this case. As I wrap this show, I just want all our viewers to remember this. A, it could have been you. A, it could have been your family. And B, Sakshi's mother and her 2 children saw her die being electrocuted in front of their eyes. Just remember that. Remember that next time you are told that an inquiry has been instituted and the guilty will be punished. Sure enough, an inquiry has been instituted. But what happens to this inquiry, all of us know. Where this inquiry report goes, all of us know. In a black hole. And by the end of it, there is no accountability fixed. No one ends up getting punished. But for one family, for the rest of their lives, it's a pain they'll have to learn to live with. So as Dilip Cherian says, next time a Vande Bharat train is flagged off, and one will be flagged off very soon in Madhya Pradesh, clap if you want to, but also ask questions. Ask questions about basic safety at railway stations, where a young woman, all of 34-year-old, was electrocuted to her death. On that note, I'm slipping into a quick break on the show. There's some more news we have on the other side for you. Do stay with us.